like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. That is Nikki Nogut and this is me, Nikita Mehra, and today's video is going to be about Nift learning diaries. So basically I'm in my hostel room. As you can see, this time I have got this. So मैंने अपना hostel move-in tour भी बना दिया है, so एक बार जाके वो भी देख लेना. And मुझसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि learning diaries कैसे बनानी है. So basically I am in BF Tech second year, but BDES के भी काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे. So I have asked my friends to show their learning diaries to you and give you some feedback and tips जिससे आपकी learning diaries काफ़ी अच्छे से बन. Thing which I wanted to say is लर्निंग डायरी स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कर देना, एंड में मत बनाना, बहुत प्रॉब्लम होती है. बिकॉज मैंने करा है वैसा भी, मैंने दोनों तरह से करा है एक्चुअली. द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड पहले से तो मेरा काम होता गया था, एंड द सेकेंड टाइम आई डिडंट स्टार्ट एंड आई हैव टू कंप्लीट इट इन 1 वीक. एंड येस, टीचर्स डोंट गिव यू द एस्टिमेट डेट्स, तो पहले से ही बनाना शुरू कर देना, और एल्स देल से कि अब नेक्स्ट वीक सबमिशन है, सो आपको फिर करना पड़ेगा. So let's start about ki what is actually a learning diary. Learning diary is a small or any size of notebook which contains visuals, more of visuals and text भी उसी के according. प्लस वो सारा का सारा आपका गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी योर ओन रिसर्च, योर ओन लर्निंग्स, जो सब आपने उस टॉपिक के बारे में सीखा. टेक के सेम 1 की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में लर्निंग डायरीज बनानी होती है. ADA दैट इज़ आर्ट एंड एस्थेटिक डिज़ाइन, एंड दूसरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में. एंड अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा जूनियर से पता चला है कि आप लोगों को इस बार फैब्रिक साइंस में भी लर्निंग डायरीज बनाने को दे दिया है. एंड उसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज एट अवर टाइम वी डिडंट हैव FS की लर्निंग डायरी. सो आई विल बी ऑल्सो आस्किंग द फैकल्टी अबाउट माई लर्निंग डायरी कि हमें भी कैसे बनानी है, बिकॉज हमें भी सेकेंड ईयर में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि 2 जो हैं हमारे सब्जेक्ट्स उसके बारे में. सो ADA की जो लर्निंग डायरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनानी होती है. हमें मैम ने उस टाइम पे ऐसे ही बोला था, एक बार आप अगेन क्रॉस चेक कर लेना. हम लोगों ने बोला था यू कैन टेक एनी साइज़ ऑफ नोटबुक. तो मेरे फ्रेंड्स ने इतनी साइज़ की भी नोटबुक ली थी एंड मैंने थोड़ी सी बड़ी ली थी. इट वाज शॉर्टर दैन दी A4 की जो लेंथ होती है. मैंने A4 से छोटी थी, A5 की आप लोग ले सकते हैं, एंड या फिर जो छोटी सी डायरीज आती है आप वो भी ले सकते हैं. प्लस मैम टोल्ड अस टू राइट ईच डे की 5-6 लाइन्स विथ विजुअल्स. एंड इस वाली ADA में ज़रूरी नहीं है आप विजुअल्स ऐड करो बहुत ज़्यादा. मैंने तो बिल्कुल भी विजुअल्स ऐड नहीं करे थे, मैंने सिर्फ टेक्स्ट में भरी हुई थी. एंड अभी मेरे पास वाली लर्निंग डायरी नहीं है, बट आई एम गोइंग टू शो यू कि मैंने किस साइज़ में बनाई थी. सो दिस इज़ द साइज़ विच आई मेड. इतने साइज़ में मैंने बनाई थी. यू कैन सी ये वाली मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी है, एंड आई जस्ट रोट थिंग्स ऐसे पूरा ऊपर से लेकर नीचे. एंड ये वाली साइज़ इज़ टोटली फिट फॉर दैट ADA लर्निंग डायरी. एंड एक बार वापस मैं कह रही हूँ मैम से पूछ लेना, बिकॉज मे बी ईयर्स के साथ साथ टीचर्स अपने वे ऑफ टीचिंग एंड वे ऑफ असाइनमेंट्स कलेक्शन में चेंजेस करती हैं. टिप्स ऑफ विजुअल बोर्ड्स मेरे साथ अभी, सो आई विल ऑल्सो बी एडिंग दैट. वो मेरी ADA के विजुअल बोर्ड्स नहीं हैं, बट वो मेरे फैशन ओरिएंटेशन के हैं जो कि SEM 2 का सब्जेक्ट है. बट येस, यू कैन डेफिनेटली टेक एन आइडिया फ्रॉम दैट, एंड आई ऑल्सो पुट सम ऑफ द इमेजेस विच जो मेरे को मिलेंगी बाद में. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट ADA. एंड ADA वाली जो फैकल्टी है ऑलवेज शी वॉन्ट्स कि आप जो टेक्स्ट लिखते हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लिखें एंड स्मॉल लिखें. अगर आप एक फ़ोटो चिपका रहे हैं तो उसके नीचे राइट द डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली कि ये फ़ोटो है, ये इस ओरिजिन से आई है, इस पेंटिंग को इसने बनाया है, दैट्स इट. बट दैट डजंट मीन कि आपको इससे ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है. ऑल दी फोटोज़ विच यू आर स्टिकिंग ऑन योर विजुअल बोर्ड, यू शुड बी नोइंग उनका स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक सब कुछ, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, किस लिए बनी थी और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आगे हुए थे. बिकॉज ऑन योर जूरी और ऑन योर
असाइनमेंट कलेक्शन ऑलवेज पूछ लेते हैं वो लोग, और उस पर फिर जज करते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तुमने चिपकाई कैसे है. सो ऑलवेज नो द फोटोज़ विच यू आर स्टिकिंग, और जो नहीं पता वो मत पेस्ट करना. तो मैं आप लोगों को अब A4 साइज़ की लर्निंग डायरीज भी दिखा देती हूँ. सो दिस इज़ द A4 साइज़ लर्निंग डायरी विच यू विल गेट. बेसिकली BDS वाले स्टूडेंट्स को दे मस्ट बी नोइंग इट एज अ स्केच बुक और समथिंग. येस, दिस इज़ दिस बुक एंड इसके पेजेस काफ़ी पतले होते हैं, बट स्टिल इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. So you can say you can definitely buy this, and this comes for 100 rupees each. On to the subject which is of Sem 2, that is fashion orientation, and ये fashion basics वाला subject होगा BDS वालों के लिए. So वो लोग भी इस वाले part को देख सकते हैं. So this learning diary was made by me last year, and this is the same learning diary जो मैंने अभी आपको दिखाई. And some of the tricks which you can do is you can add these rings. ओके, सो मैंने ये रिंग्स ऐड करी थी कि आपको स्टेशनरी वाली मार्केट में 5 रुपीज़ की एक या फिर 6 रुपीज़ की एक मिल जाएगी. आई बॉट दी होल पैकेट टू यूज़ इट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. प्लस व्हाट आई डिड वाज आई पेस्टेड अ नाइस ब्लैक पेपर, एंड देन आई पुट अ वेरी नाइस photograph, एंड देन आई रोट द सब्जेक्ट नेम ओवर हियर. एंड वापस से इसका कवर पेज मैंने कुछ ऐसे बनाया था, फैशन ओरिएंटेशन एंड ऑल दिस. दिस इज़ माई सबसे मेहनत वाली लर्निंग डायरी. सो मैं इसकी भी पूरी की पूरी क्लिप ऐड करूँगी. फॉर एग्जाम्पल इन दिस लर्निंग डायरी माई थीम वॉज ब्राउन पेपर एंड न्यूज़पेपर. सो मैंने इसी के ऊपर अपने सारे पेजेस बनाए हैं एज यू कैन सी. एंड हेडिंग भी हर पेज में एक ही जैसी डालना, अलग अलग मत डालना. फॉन्ट साइज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना. एंड दिस इज़ होल मतलब फिज़िकल है, और मतलब वर्ड पे नहीं बना के लगाया है, क्योंकि इन दी सब्जेक्ट्स यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी डिजिटल वर्क. सो या, my learning diary. So this is the front cover page. As I said, I used a magazine photograph plus the heading of the subject. And this is the next page, and always write your roll number over here and name, and then what is the subject for. Always include the index. Index के बिना you will lose marks. So my first page was fashion as language, and I wanted to express it in this way. Each student have their different first pages, and then we come is history, fads and motifs and patterns. And always keep the 2 pages का थीम काफ़ी सिमिलर, वरना बहुत अजीब लगता है. एंड यू ऑल्सो नोटिस एज वेल, इसमें मैंने सब कल्चर्स रखे हैं, तो मैंने 2 सब कल्चर्स ऐसे ऐसे रखे हैं, ना कि मैंने एक सब कल्चर इधर और एक सब कल्चर इधर. ऐसे नहीं रखना है. ऑलवेज कीप द ऐसे ऐसे करस्पॉन्डिंग पेजेस ही रखना, थीम से मैचिंग. प्लस द टॉपिक शुड ऑल्सो मैच. एंड देन देर इज़ लिटिल ब्लैक ड्रेस का टॉपिक, फैशन फोरकास्टिंग. एज यू कैन सी दिस ईयर यू नो हॉट पिंक एंड ऑल दैट वॉज सो मच इन ट्रेंड. प्लस दिस silver sort of. And then avant-garde, I also included this, and this was one of my favorite pages. And then fashion cycle, top brand labels, and then comes outfits. This is again my favorite page, outfits and ensembles का पेज था, but I did only in outfits क्योंकि ensemble मैंने पहले कर चुके थे. And then comes the style, and ये भी मैंने include करा था. I got these images from some theme board sort of. And then there comes a fashion theory की चीज़, and it opens it like this. Where did I, yeah. सो जस्ट लव इट सो मच. मैंने इतनी मेहनत कभी भी नहीं करी होगी ज़िंदगी में, मैं पहली बार कर रही हूँ. एंड देन दिस इज़ द कॉस्ट्यूम पेज. आई टुक द गुजराती एंड द कच्छी पर्टिकुलरली, एंड देन उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिखा था ऑलवेज़ कीप योर राइटिंग पोर्शन मोर दैन योर इमेजेस. मतलब BF टेक के लिए मैं बता रही हूँ, BDS वाला के लिए तो चलता है, बिकॉज देन दे से कि तुमने रिसर्च वर्क कम करा है. सो ऑलवेज़ मेक श्योर द प्रपोर्शन ऑफ द टेक्स्ट एंड द प्रपोर्शन ऑफ द इमेजेस स्टेज सेम. एंड अगेन इफ द स्पेस इज़ लेस यू कैन अगेन ऐड दीज थिंग्स. And Kala Ghoda event also happened in the Kala Ghoda place in Mumbai, CST के side में. So yes, and this is the collection page, and this was my last page and of the first assignment, and I just loved it. Always make your last page interesting, beautiful जितना हो सकता है, because उसी के बेस पे रिमार्क मिलते हैं. All over good I got. And क्योंकि अगर हो सकता है आपके बीच के पेजेस अच्छे हैं, इनका पेज ख़राब है, तो इट विल डेफिनेटली यू नो शो कि आपने एंड में जल्दी निपटाया है. सो मैं बोलूँगी कि पहले लास्ट पेज कर लेना इफ़ आपसे नहीं होगा. सो यस, दिस वॉज इट फॉर माई सेकेंड सेमेस्टर. एंड
not sorry, second semester. This was for the second assignment actually we have to make. So this was the page for fashion business, and ये वाली जो इस वाले से जो है I have given less time in it because there were many other subjects to focus on, and we were given less time as well. So I actually kept my theme a little clear, like newspaper sort of thing plus brown paper, and I have used this same heading style and heading font for each and every page to look at, you know, so that it looks connected throughout, कि ऐसा ना लगे कि एक पेज किसी और लर्निंग डायरी का ले लिया है एंड दूसरा पेज किसी और का. So yes, I have used ऐसे वाली headings and ऐसे वाली just to give it a more, you know, interesting look. Plus this is not a single photo guys. I have put a lot of photos and made it a thing to divide the page in two halves, because I don't like to put both the things ek saath. So I always like segregation, so I always do it with fine borders to make it look more aligned, and these are knockoffs. And expert lectures, yes, one of the most important thing is you always have to include expert lectures in your learning diaries. It gives you more marks, plus your research work. So I did a research work in Ecokari, and this is my page in that, and this is of Bandhani, and I have used my ADA ka visual board in this, so you can also do it. I made it in the first semester, and in the second semester I just clubbed it in one page and do it for the another subject as well. It you know, reduces your efforts actually, मतलब कि कम time लग रहा है. And this was Anu Tandon's work again, fashion fast fashion actually. And then there is a mango ka page, slow fashion. And then this is Met Gala. Yes, this was my personal research work I did on Met Gala, plus I did in the Dior Fashion Week which took place in Mumbai, so I made sure to include it. And yes, अगर कोई भी events हो रहे हैं तो do make sure कि आप उसको include करो. Lakme Fashion Week हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, just always include it in your learning diary. And this is one of my favorite portion. I just love this. And I personally loved her look, so I included only her look in my page. And this is fashion color theory, and this is expert lecture. By the way, this is made by me. I made an outfit for Ananya Pandey. She always dress ups like this, and yes, this is all I did. And yeah. And now talking about the engineering drawing वाला subject जो कि BF Tech वाले students को मिलेगा इस बारी. So हम लोगों को भी learning diaries बनाने का बोला था, and plus again it was said to be made very simple. हमें simple ही बनाने को बोलते हैं BF Tech वालों को, because they know हमें थोड़ी creativity कम होती है. Now the learning diary, sorry for इसका आगे पीछे का पेज नहीं है मैंने, क्योंकि इसको reuse करा है. Okay, so this is it. Index सर टोल्ड टू मेक इट वेरी सिंपल गाइस, सो डोंट जज. ओके, मैंने बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है. मल्टी व्यू ड्राइंग सिस्टम, फोटोज़ इमेज करी है, प्लांट लेआउट. सो ऑलवेज कीप इट सिंपल एंड नीट. ठीक है. डिज़ाइन के बारे में आई हैव पुट 2-3 डिज़ाइन इमेजेस, एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री इन पैटर्न मेकिंग. ठीक है. देन कम्स की नेचुरल, मतलब नेचर में किस किस तरह से आपकी ज्योमेट्री होती है. सो दिस इज़ द गोल्डन रेशियो, दिस इज़ द गोल्डन रेशियो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सर टोल्ड टू, यू नो, focus it on more on the terms. As you can see, this all is made on golden ratio. Now what is golden ratio, all these things. Then projections of solid, isometric, trimetric, perspective, 2 perspective, 1 perspective, 3D geometry. See, I have drawn it and it's just so neat. क्योंकि सिलेंडर का क्या कहाँ से लेके आओगे. सो फ्रस्टम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ, एंड 2D geometry and all this thing. So yes, this was it for my this diary, and I got a pretty good marks. Like I got 10 में से 9 शायद.
So yeah, that is it for today's video. Hope you have enjoyed it. So do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel so that whenever I post new content, you guys get notified first. Plus this video was a very requested one क्योंकि मुझे at least रोज़ daily 3 to 4 students मिलते थे कि please journey diaries के बारे में बता दो, because I can understand the confusion which you are going through कि starting में LD के बारे में पता नहीं है, बनानी पड़ जाए. So yes, this is it. So do share it among each one of your friends, no matter what campus they are in. So yeah. Bye bye and thanks for watching. Call it spring, like